सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। Hello दोस्तों, so here I am with a new lecture on strategic management and again a new motivational quote for the day. So it is a slow process but quitting won't speed it up. As you can see on the screen, this is a motivational quote which says it is a slow process but quitting won't speed it up. Yes, it takes time to get successful, but if you quit then you have no option and you have no option to become successful. So believe in yourself and believe in the time, believe in your time, you will be successful soon. And today's lecture topic is steps in strategic planning. It is the easiest and important topic which might be asked in examinations. So without wasting much time, let's begin. A systematic approach to formalizing strategic plans consisting of the following steps. क्या क्या steps हैं? Internal analysis. An internal analysis that encompasses assessing company's strengths and weakness, financial performance, people, operational limitations, corporate culture, current positioning in the market, the overall characterization of the condition of the company and critical issues facing by the organization. Simply, internal analysis. What do you understand by internal analysis? Means अपने अंदर की स्ट्रेंथ और वीकनेस स्वॉट एनालिसिस करना अपने अंदर का। अपने अंदर मतलब कि कंपनी अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज करेगी, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है, उसके लोग कैसे हैं, उसके ऑपरेशनल लिमिटेशंस कितनी है, कहाँ तक वो ऑपरेट कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं, कॉर्पोरेट कल्चर, व्हाट इज़ द कॉर्पोरेट कल्चर, what is the current positioning in the market of that particular company, and the overall characterization of the condition of the company and the critical issues they are facing, right? So this is basically internal analysis, which includes everything related to internal factors. Now if I come to external analysis, an external analysis that focuses on analyzing competitors, assessing market opportunities and threats, evaluating changing technology that could impact the organization, analyzing regulatory or legislative concerns, changes and trends in the markets the company operates in, and other potential outside influence the organization. External analysis में analyze करेंगे competitors, assessing market opportunities and threats. मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, उसको असेस करना, ठीक है. Evaluating changing technology that could impact the organization. The technology is rapidly changing, so they will analyze external factors that could impact the organization. What technology can impact the organization? Analyzing regulatory or legislative concerns, changes and trends in the market the company operates in. जिसमें कंपनी ऑपरेट कर रही है उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहा है, मार्केट में क्या क्या ट्रेंड आ रहा है, एंड अदर पोटेंशियल आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस द ऑर्गेनाइजेशन. जो भी पोटेंशियल बाहर का ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, लाइक गवर्नमेंट पॉलिसीज, राइट. सो वन ऑफ द एग्जांपल इज दैट. Now summary of first and second step. Summarizing the current situation based on the information gathered and evaluated in steps 1 and 2. This step is important to process because it allows members of the planning team to more easily get a feel of what opportunities and obstacles lie ahead. Then we will summarize first and second, internal analysis and external analysis. The things we get from internal analysis and external analysis, we will summarize those, because what it will do, it will allows the members of the planning team, जो प्लानिंग कर रहे होंगे, जो प्लानिंग टीम होगी, उनको एक ईजिली एक फील मिल रही है क्या अपॉर्चुनिटीज़ और क्या ऑब्स्टेकल्स हैं आगे आने वाले टाइम में. तो इस एनालिसिस उनको पता चल जाएगा. तो हम यहाँ पे समराइज कर देते हैं फर्स्ट और सेकंड स्टेप को, राइट. नाउ द फोर्थ स्टेप इज डेवलपमेंट ऑफ अ मिशन, vision or purpose statement. Then we will develop mission, vision and purpose statement. In this step, the team is starting the process of focusing the organization and its people on what the organization is all about and what is important to the organization. Basically, what is development? You will develop mission, vision and purpose statement. You will see how good your organization people are and what organization is all about and what is important to your organization, right? Then you will set a goal. Goal setting is fifth step. Every organization needs goals. Again, focus is a critical element in success of any business. Focus is a critical element in success of any business. Focus. Objectives. Defining objectives that support the goals. You will corporate entities will define some objectives that will support the goals. Objectives are more specific in nature and are supportive of the goal. You have set an objective which will help you in achieving the goal, right? So objectives are more specific in nature. They bring into even great focus to the goals of the organization. They help in getting the greater focus to the goals of the organization. ठीक है. Strategies. Development of strategies. Strategies को develop करना. Strategies begin defining how the goals and objectives are going to be achieved. Strategies help करते हैं कि goals और objectives आप कैसे achieve कर सकते हैं. तो यही कुछ steps होते हैं. बहुत ही easy है, ठीक है. आप reading देंगे एक बार आपको पक्का याद हो जाएगा. While not all strategic plans include tactics, a good strategic plan will include at least the key tactics thought to be important supporting the strategies developed in above step.
सारे स्ट्रेटेजिक प्लान में टैक्टिक्स नहीं होती, बट एक गुड स्ट्रेटेजिक प्लान में कम से कम की टैक्टिक्स होती हैं जो आपको अचीव स्ट्रेटेजीज डेवलप करने में हेल्प करती हैं। जैसे आपने ऊपर स्ट्रेटेजी यहाँ पर डेवलप करी, उसमें हेल्प करती हैं, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख दोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है, ठीक है। तो यही होते हैं कुछ स्टेप्स। कौन कौन से? इंटरनल एनालिसिस करोगे, एक्सटर्नल एनालिसिस करोगे, कोई रिविजन कर रहे हो, ठीक है, मेरे साथ बोलना। स्टेप्स क्या क्या है? इंटरनल एनालिसिस देखना नहीं है, एक्सटर्नल एनालिसिस, देन समराइज, डेवलपमेंट, मैं ही भूल गया, मेरे को देखना पड़ेगा डेवलपमेंट, देन गोल सेटिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज, राइट। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, ये आप पढ़ोगे तो आपको याद हो ही जाएंगे, ठीक है, बहुत ही बेसिक हैं। So this is it, and if you are new to this channel, then do not forget to subscribe and hit the bell icon. Also like the video and share it with your friends so that they can also take the maximum advantage of strategic management classes. That's it. See you all in the next video. All the best.